हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एस चैनल। आज हम देखेंगे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, दैट इज शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एनटीसीए। सो चलिए देखते हैं नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी क्या है। सो इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी। ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ द एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसके अंडर आता है। ओके, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्या है ना, स्टैट्यूटरी बॉडी है। सो इसको कॉन्स्टिट्यूटेड किया गया था। ओके, सो अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ओके, सो एज द अमेंडेड, इसको जो अमेंडेड हुआ है 2006 में। सो फिलहाल 2006 में किस लिए अमेंडेड हुआ है ना, फॉर द स्ट्रेंथनिंग ओके टाइगर कंजर्वेशन एज पर द पावर्स एंड फंक्शंस असाइंड टू इट अंडर द सेड एक्ट। ओके, सो कंपोजिशन हम देखेंगे तो ये जो कंपोजिशन है इसका एक चेयरमैनशिप रहता है। ये चेयरमैनशिप जो है मिनिस्टर ऑफ द एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट रहता है। देन द अथॉरिटी में क्या, अथॉरिटी विल हैव द 8 एक्सपर्ट रहेगा एंड और क्या है, प्रोफेशनल्स having the qualification and experience in the wildlife conservation and the welfare of the peoples including the tribals. Okay, apart from the 3 members of parliament रहेंगे, of whom 2 will be elected by the house of people and one will be the council of states. Okay, so function of NTCA का क्या है, फंक्शन क्या है मेन, तो फंक्शन है इसका 5 है। ओके, सो पहला जो है इंश्योरिंग द नॉर्मेटिव स्टैंडर्ड्स इन टाइगर रिजर्व मैनेजमेंट। Then preparation of reserve specific tiger conservation plan, laying down the annual and audit okay report before the parliament, and then instituting okay state level steering the committee under the chairmanship of chief minister, and establishment of the tiger reserve foundations, then according to the approval of declaring the new tiger reserves. ठीक है, that's all, thank you.